Hello students, welcome to this lecture on interferometers and diffraction gratings in the module of Introduction to Optical Instruments in this course on basic instruments. Up to this we have discussed a lot of optical instruments or components of optical instruments like lenses, mirrors, prisms, spectrometers, polarizers, filters, and today we are going to talk about interferometers and diffraction gratings. So you are already familiar with what is interference, what is diffraction, and our focus in this lecture is to talk about the different types of interferometers and its application and its history. So here we are looking forward for for instruments point of view to give an exposure to an undergraduate students that there are these different types of interferometers and diffraction gratings and how they are utilized in different fields or different instruments. So let us try to figure out what are these instruments. Basically in this slide I'm trying to define what are these instruments, what are interferometers and what are diffraction gratings. So let us read this. Interferometers are optical devices that utilize wave properties of light. So light shows a dual nature, and there are few phenomena which is associated with wave properties, and there is some phenomena which is associated with particle nature. So interference is wave demonstration of wave nature of light. To create interference pattern, so interferometer creates interference patterns, और इनकी help से हम क्या कर सकते हैं? We can do precise measurement of distance, length and angle. So interferometer work by splitting a beam of light. You know that we need, for interference, to see interference we need to have two coherent sources. So what it does, most of the time it splits a beam of light into two and sending each beam along different paths and then recombining them to create an interference pattern. This is what actually happens in a interferometer. So the resulting pattern can be used to measure tiny differences in the path length of the two beams, which can be translated into accurate measurements. So this is the crux of our working of interferometer. So there are different type of interferometer, there are different objectives. In your first year, if you have an exposure of physics lab, so some of the experiment of optics you must have conducted in your first or second semester. So many places you have diffraction gratings, you have Newton's ring, so you know what interference pattern look like. So, and this is about interferometers. And if you think about what are diffraction gratings, they are structures that diffract light. So their diffraction phenomena comes in the picture, and what it does, it creates interference patterns that allows for the separation of light into its component wavelengths. So in diffraction grating, we separate light into different wavelengths. हम लोग जैसे प्रिज्म में काम करते थे, जैसे प्रिज्म की बात किए थे तो हमने कहा कि स्पेक्ट्रम बनाता है. This similar thing happen here in diffraction grating, but the phenomena we call it diffraction. Diffraction gratings होते क्या है? Basically it consists of series of parallel lines or grooves that are precisely spaced to create constructive and destructive interference of light waves. So this is about basic introduction of interferometers and diffraction gratings. Let us move further to better understand these things and to have an to look its historical development, कैसे ये चीज़ें आई और कैसे हम लोग ने आज
बहुत तरह तरह के जो इंटरफेरोमीटर्स हैं, एंड वी हैव ऑल दैट, बट इट हैज़ बीन डेवलप्ड, एक स्टोरी है. तो जब भी हम साइंस पढ़ते हैं, जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं, सो इट इज़ अ लॉट ऑफ स्टोरीज देयर. सो whenever you get time, try to go through that, try to understand, try to read about that. If you read about that, you will get a lot of insights, because this is a journey. This development of science is a journey, and in the journey you have no final destination. So the important thing is the journey, how you develop your understanding. So in order to appreciate that journey, if you read about the people who work in this development, so it is inspiring, and it is good for your finding your way out. So interferometers and diffraction gratings have long and fascinating history in the field of physics. The earliest form of interferometer was developed in 19th century. तो ये जो पहला पहला इंटरफेरोमीटर बना था, इसमें हम लोग नाम सुनेंगे तो एक फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं फिजाओ. इन्होंने लाइट की स्पीड मेजर की थी, और उसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, दैट वाज फर्स्ट इंटरफेरोमीटर. उसके बाद में अमेरिकन फिजिसिस्ट है माइकलसन, अल्बर्ट माइकलसन. ही डिड डेवलप्ड दिस better version of this interferometer, and which is known as Michelson interferometer. And I don't know if you are if you have heard about Michelson Morley experiment. Is very fundamental in the development of understanding of nature of light. So this became a fundamental tool in modern physics. So Michelson and Fizeau, these are the people who developed a first good interferometer. And in diffraction grating, if you read about it, it was discovered by German physicist Joseph von Fraunhofer. So you have heard about Fresnel class of diffraction, Fraunhofer class of diffraction. So he has done very fundamental work in this development of this story. So in early 19th century, diffraction grating फ्रॉनहोफर ने पहले बार बनाया था. फ्रॉनहोफर ने क्या देखा? He observed that when light passes through a narrow slit, it diffracted into a series of parallel lines. He then went on to develop the first diffraction grating, which was later used by Henry to make precise measurement of atomic spectra. So as you continue your journey in physics, you will find a lot of applications of these basic instrument. और इन्हीं सब इंस्ट्रूमेंट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हम लोग बात करते हैं, उसी पे बेस्ड हैं आज जब हम एडवांस टेक्नोलॉजिकली एडवांस मोर प्रिसाइज एंड बेटर मेजरमेंट के जो हम इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर रहे हैं. ये सब भी कहीं ना कहीं इस स्टोरी से जुड़े हुए हैं. और जब कभी आप फ्यूचर में रिसर्च लैब्स में काम करेंगे या इंडस्ट्री में कुछ ऐसी जगह काम करेंगे, then you will find out this understanding of basic instruments is the crux of all that. All advancement is built on that base. Okay, so this is bit history about interferometers and diffraction gratings. Now let us try to look its wider application in different fields. So they have done a tremendous change in this physics research and industry. Interferometers को कहाँ यूज किया जाता है? They are used to measure speed of light, detect gravitational wave. It is buzzword. If you remember, in 2015, first time the gravitational waves were detected, and how it was detected? Interferometers were used here. Okay, so this was prediction by Einstein's general theory of relativity, and later, at just few years back, it was experimentally observed and make this theory more interesting.
And to test the accuracy of optical devices, we were talking about basics of measurement, and at that time we talked about different type of errors, we talked about calibration of instrument. So there is a need, when you develop an instrument, we need to test how it is accurate, it is doing better measurements. So for that also interferometers are used. They are also used in industrial applications such as manufacture of precision optics, calibration of machine tools. All that places we need interferometers. So they are very important optical instrument. And now let us talk about diffraction gratings. Gratings are extensively used in spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले जब पिछला लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रोमीटर की बात की थी, एट दैट टाइम वी आल्सो टॉक अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा बहुत. स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या है कि मैटर और लाइट के बीच जो इंटरेक्शन होता है उससे हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं उस मैटर के बारे में. तो ये बेसिकली हम नए मटेरियल की डिस्कवरी और उनके कैरेक्टराइजेशन के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, as well as in the development of new technologies such as laser, telecommunication, optical data storage. All that we need to have an understanding. For that we do spectroscopy, and spectroscopy में ये extensively use होते हैं diffraction gratings. Overall, the development and continued use of interferometer and diffraction grating have contributed significantly in advancing our understanding of fundamental properties of light and matter, have enabled numerous technological advancements that have transformed our world. So these instruments are very important, and they have played a critical role in understanding in the history, as well as presently they are much more useful. We have much more advanced versions of these instruments. So let us try to go further and figure out it one by one. पहले हम लोग इंटरफेरोमीटर के बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर हम डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग समझते हैं, एंड देन लेट अस ट्राई टू कंबाइन क्या इनका दोनों का कुछ आपस में भी लिंक है. सो बेसिकली अगर हम लोग इंटरफेरेंस की बात करें तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, और आई होप कभी न कभी लैब में आपने इंटरफेरेंस पैटर्न्स भी देखे होंगे, or superposition principle of light and all that, these basics of optics. I hope you are familiar with all. So here in very briefly we are just discussing interference. Interference कब होता है? जब दो या दो से अधिक वेव स्पेस में और स्पेस और टाइम में ओवरलैप करते हैं, and then it is superposition principle. When the waves meet, they add together, creating regions where amplitude of the wave is larger, that is constructive interference, and when the region of amplitude is smaller, like destructive interference जहाँ होता है, तो ये ऐसा हो जाता है. जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दो वेव हैं, ये जब ओवरलैप करेंगी तो ये ऐसा सिचुएशन हो सकता है और एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है. दिस इज, ये एम्पलीट्यूड जुड़ गया, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया. देयर इज सम डिफरेंसेस इन दैट, यू कैन लुक एट इट. तो इंटरफेरोमेट्री जो पूरा है ये इसी फिनोमेना का एडवांटेज लेता है. इट यूज two or more waves to create interference pattern, and that can be analyzed to make accurate measurements. I hope you are very much familiar with Young's double slit experiment. यहाँ जैसे लाइट आ रहा है, ये दो slits हैं, and then how you see patterns on the screen. कैसा हमको alternate bands मिलते हैं. This is interference, and interferometers are utilizing that property of light to deliver better measurements, very precise length, angle and all. Now let us try to get a brief idea about what are different types of Michelson interferometers. So one we discussed very first when we are discussing history of interferometer, that is Michelson interferometer. Michelson ने इसको डेवलप किया था. और ये इंटरफेरोमीटर कैसा है? If you look at, there is a picture associated with
to get an idea how it is. This is light source. Here you can see this half silvered mirror. हाफ सिल्वर्ड मिरर क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे लाइट पड़ेगा तो कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा. कंप्लीटली सिल्वर्ड होता तो सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज हाफ सिल्वर्ड मिरर. सो एंड वी हैव वन मिरर हियर, वन मिरर हियर. देयर आर टू मिरर्स. लाइट comes here and it splits into two parts and goes here, comes back, goes here, comes back, and then there is interference. यहाँ पे कंपनसेटर लगा है जो इसके जो पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जा रहा है कुछ या कुछ इस बीम को ज़्यादा चलना पड़ रहा है उसको कंपनसेट कर सकें, इसलिए कंपनसेटर लगा है. एंड देन यू कैन सी हियर पैटर्न. तो दिस इज व्हाट ऑब्जर्व पैटर्न इज. आँख से देख सकते हैं, ऑप्टिक्स की बात है, डिटेक्टर्स भी लगा सकते हैं. So this is one of the most commonly used interferometers and it consists of beam splitter. Beam splitter क्या है, ये जो सिल्वर मिरर है यही है. दो मिरर्स हैं और एक डिटेक्टर है. The beam splitter divides incident beam into two beams and travel different path and then they recombine to create interference pattern. This is what happened in Michelson interferometers. So क्या कितनी इंटरफेरोमीटर के बारे में आप जानते हैं. लैब में हो सकता है आपके माइकलसन इंटरफेरोमीटर हो, फैब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर हो, कई सारे हो सकते हैं और धीरे धीरे हो सकता है आप अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के दौरान इन सब चीज़ों को का हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी पाएँ. लेकिन यहाँ हम एक ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू गिव एन ग्लिम्स ऑफ ऑल दैट, टू गिव सम बेसिक्स, to give an exposure of different type of instruments. So interference आप जानते हैं, interferometers आप जानते हैं. Now here look at different type of interferometers. So there is another Mach-Zehnder interferometer. ये क्या है, इसका डायग्राम यहाँ पे आप देखें तो इसमें हमने बीम स्प्लिटर है, एक भी बीम स्प्लिटर ये है, एक बीम स्प्लिटर ये है, दो मिरर हैं और यहाँ पे हमारे पास डिटेक्टर है. So what it does, it uses two beam splitters and two mirrors arranged in a specific configuration. It creates an interference pattern by splitting beam of light into two beams that travel along different paths and recombine to create interference pattern. This is how interference pattern is formed here. Then Fabry-Perot interferometer. Fabry-Perot interferometer क्या होता है, ये interferometer में multiple reflections between two mirrors to create an interference pattern. तो यहाँ पे क्या करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन करके एक हम इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं. हियर दिस इज लाइट सोर्स, लेंस से हमने इसको पैरेलल किया या कुछ एक ऐसे एंगल पे इस पे डाल रहे हैं. देन देयर आर टू मिरर्स, लाइट गोज हियर एंड देयर आर मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड देन हियर वी कैन सी सम पैटर्न. तो ये मिरर से कुछ लाइट पास होगा तभी ये हम यहाँ पे देख सकते हैं. इट्स नॉट दैट मिरर की कुछ लाइट पास ही नहीं हो रहा है, इसको समझें. तो ये कंसिस्ट करता है दो पैरेलल मिरर और स्मॉल गैप बिटवीन देम. लाइट इंटर्स इन द गैप, रिफ्लेक्ट्स ऑफ द मिरर्स एंड क्रिएट इंटरफेरेंस पैटर्न. दिस इज व्हाट फैब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर डज. तो हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं इंटरफेरोमीटर के, हम जस्ट ये दिखा रहे हैं कैसे दो बीम बन रहा है, कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, क्या इसके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है. दिस इज व्हाट वी आर गिविंग अ वेरी बेसिक एक्सपोजर ऑफ these instruments. Then there is an interferometer called Sagnac interferometer. How it is different? You can see adjacent picture here. This type of interferometer uses single beam of light that is split into two paths that travel in opposite direction around a closed loop. तो क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट आया, बीम स्प्लिटर, बीम ये टूट गया, फिर it goes to this mirror, this mirror, this mirror. There are three mirrors and this is of kind in loop kind of structure. And ये क्या करता है, that can be used to measure the rotation rate of loop. loop जो बना है उसका रोटेशन रेट क्या है उसको मेजर कर सकते हैं. तो इनके एप्लीकेशन अपने तरह के हैं. ये सारे इंटरफेरोमीटर्स हैं, ये इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करते हैं. लेकिन ऐसे क्यों बनाए गए, अगर आप इनकी हिस्ट्री को थोड़ा समझना चाहेंगे, इनके इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कुछ ज़रूरत के लिए पर्टिकुलरली ऐसे इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए गए. सो जब हम आप अलग अलग तरह की ये सब बातें समझ रहे हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो ये आइडिया इसका ये है कि आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करे कि ऐसे थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके क्या कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि अलग इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए बनाया जा रहा है. दिस इज ऑल फॉर सम एक्सपेरिमेंट
कुछ डिजाइन करने किया गया, कुछ सोचा गया और उसको समझने के लिए ये प्रॉपर्टी है जो इंटरफेरेंस की, उसको यूज कर रहे हैं। तो जब आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप जानते हैं तो साथ में ये जानते हैं कि हम कैसे जो कंसेप्ट सीखे हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं, एंड दिस इज things goes to the next level. That is why experimental or instrumental exposure is very very important for a physics person. Then this is one Twyman green interferometer. ये क्या होता है? ये इंटरफेरोमीटर क्या किस लिए यूज करते हैं? टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ ऑप्टिकल कंपोनेंट्स। ऑप्टिकल कंपोनेंट्स जो बनाए गए हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, इसको टेस्ट करने के लिए इंटरफेरोमीटर यूज होता है। जैसे लेंसेज हैं, मिरर्स हैं, तो इसमें क्या किया, एक बीम स्प्लिटर है, एक रेफरेंस मिरर है, एक टेस्ट मिरर है। लाइट फ्रॉम सोर्स इज स्प्लिट इनटू टू बीम्स, वन ऑफ व्हिच रिफ्लेक्ट द डिफरेंस मिरर एंड ओवर अदर आफ्टर द टेस्ट मिरर। एक टेस्ट मिरर पे गया, एक रेफरेंस मिरर पे गया, फिर उनको रिकम्बाइन करके इंटरफेरेंस पैटर्न बना, और फिर इंटरफेरेंस पैटर्न को देख के उसको मेजर करके हम ये जान सकते हैं कि जो टेस्ट मिरर है उसका क्वालिटी कैसा है। So this is all about interferometers, types of interferometer. Now let us try to look forward कि इनके क्या क्या applications हैं as such. हमने इंटरफेरोमीटर के बेसिक्स को समझा, उसके डिफरेंट टाइप्स को समझा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। कुछ एप्लीकेशन की बात पीछे डिस्कशन में आई है, हियर वी आर डूइंग इट सिस्टमेटिकली। तो ये कह रहा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं इंटरफेरोमीटर से। हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं। ये ज़्यादातर ऐसे प्रिसाइज मेजरमेंट के, लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हम लोग इंटरफेरोमीटर का बहुत सारे जगह यूज करते हैं। बाय एनालाइजिंग इंटरफेरेंस पैटर्न काज्ड बाय एन ओवरलैपिंग लाइट waves, the position of moving object or thickness of material that can be determined with high accuracy. So that is application of this. They are also used to measure the shape of objects such as lenses, mirrors, and detect minute change in their geometry. So for that precise measurements, we have interferometers in our laboratory to perform that tasks. दूसरी चीज, testing optical components. Interferometers are used extensively in testing calibration of optical components. जो ऑप्टिकल कंपोनेंट्स हम बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं, तो उनको कैलिब्रेट करना या उनको चेक करना कि ठीक कर रहा है कि नहीं, इसके लिए भी इंटरफेरोमीटर्स यूज किए जाते हैं। जैसे लेंसेज, प्रिज्म्स, मिरर, ये जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़े, अगर उनको हमको कैलिब्रेट करना है तो हम interferometer use कर सकते हैं. By analyzing interference pattern created by light waves reflecting of these components, engineers and scientists can access their quality and accuracy, and this is particularly important in the production of high precision optical instruments such as telescopes and microscopes. टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप के बारे में भी हमने बात किया है, और जब हम बहुत प्रिसाइज या बड़े इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो जो हम कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं उनकी क्वालिटी और उनकी मेजरमेंट का एक्यूरेसी, ऑल दैट थिंग्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, एंड इंटरफेरोमीटर्स प्ले की रोल इन डूइंग दैट जॉब. सो नाउ one more interesting thing which we discussed in just previous slides, कि gravitational wave के detection में भी interferometers have plays key role. Interferometers played key role in detection of gravitational waves, a phenomena predicted by Albert Einstein's theory of general relativity. In 2015, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, that is LIGO. You must have heard about this term if you love physics. There's a lot of buzz, a lot of discussion about this, because this observation has proved Einstein's theory of general relativity once again. So it detected gravitational wave for the first time using two interferometers located in Louisiana and Washington. The interferometers measure tiny changes in the length of their arms caused by passing a gravitational wave, confirming one of the most important predictions of Einstein's theory. So this is another very key role, very important part interferometers have in
playing in the development of our understanding, advancing our understanding. And then एस्ट्रोनॉमी में भी हम लोग बहुत सारी जगह इनको यूज करते हैं. यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताया गया है, इसको आप सुन सकते हैं. तो इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ एक फील आना चाहिए. आई फील इट शुड हिट यू. दैट इज व्हाट इंटरफेरोमीटर एस्ट्रोनॉमी में क्या करने के लिए यूज किए जाते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए और उनकी प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए इंटरफेरोमीटर्स यूज करते हैं. अब सबसे बात यह है कि इंटरफेरोमेट्री क्या कर सकता है? इट कैन बी यूज टू कंबाइन लाइट फ्रॉम मल्टीपल टेलीस्कोप्स and effectively creating a virtual telescope with a much larger aperture. हम लोगों ने अभी तक बात किया कि क्या होता है, इंटरफेरेंस दो लाइट वेव्स थी और वो कंबाइन होके उनका वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड ऑल दैट थिंग्स वी नो. सो हियर क्या एप्लीकेशन बता रहे हैं, कैसा एप्लीकेशन सजेस्ट कर रहे हैं कि दो या कई सारे टेलीस्कोप्स हैं अलग अलग जगह पे, उनको हम कंबाइन कर सकते हैं, उनका इंटरफेरेंस पैटर्न बना सकते हैं. एंड फ्रॉम दैट इंटरफेरेंस पैटर्न वी कैन थिंक ऑफ ए वर्चुअल टेलीस्कोप व्हिच इज मच मोर लार्जर अपर्चर. एक्चुअली जो हम इमेज बनाएंगे कई सारे टेलीस्कोप को मिला के उनके इंटरफेरेंस पैटर्न से, तो वो जो इमेज देगा हमको, दिस टेक्निक इज नोन एज इंटरफेरोमेट्रिक इमेजिंग एंड इट हैज बीन used to create high resolution images of stars and galaxies. So you see the phenomena, the properties you are looking in your lab, in your basic instruments and day-to-day life, and they have multiple applications, multiple uses in the development of our understanding, advancing our knowledge in multiple ways, in multiple fields. So this is what important, this is how these instruments are important in this whole role of science. Now let us move to the next instrument which we were trying to discuss. हम लोगों ने शुरू बात की इंटरफेरोमीटर्स एंड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स का, और फिर हमने इसके इम्पोर्टेंस, इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थोड़ा इन सब बात करके फिर हम इंटरफेरोमीटर पे गए. और इंटरफेरोमीटर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और कहाँ किस तरह से यूज किए जाते हैं, वी ट्राई टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ दैट. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच वी आर ट्राइंग टू फोकस in today's lecture. The basic principle of diffraction grating is diffraction of light. So here we are concerned about the diffraction. This is a property of light. We are utilizing it to have to advance our understanding about nature. So when light waves are incident on a diffraction grating, they are diffracted. मतलब bent हो जाते हैं as they pass through the grooves or lines in the grating. This causes the light wave to interfere with each other and creating a characteristic pattern of bright and dark fringes, and the spacing between grooves determine the angle of diffraction, which in turn determine wavelength of light that is diffracted. So this is what diffraction patterns look like. Light is falling on this, it is bending and it's making different orders, zero order, first order, here we go second order. It's like that. So you are familiar with the phenomenon of diffraction, and you have a basic course in optics already. So here our focus is on instruments, so we are going further assuming that you know what is diffraction. So gratings are basically two types. दो तरह की ग्रेटिंग्स होती हैं अगर हम उनका जनरल क्लासिफिकेशन की बात करें. एक है ट्रांसमिशन ग्रेटिंग और एक है रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग. यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत आसानी से क्या हो रहा है. यहाँ लाइट पड़ रही है, दिस इज ग्रेटिंग, एंड हियर वी सी पैटर्न्स. हियर in the air, this is the grating and this is incident beam and this pattern. So light coming from the same side going reflected back, so this is reflection grating and this is ट्रांसमिशन ग्रेटिंग. थोड़ा सा इनको समझने का कोशिश करते हैं. जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ये कह रहा है कि ये ऐसे बनाए कैसे जाते हैं. दे मेक
by etching groups in a thin transparent material such as glass or plastic. These gratings are commonly used in spectroscopy and other applications where high spectral resolution is required. तो एक प्रॉपर्टी ग्रेटिंग क्या है कि उसका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन क्या है, अलग अलग वेवलेंथ को अलग कर सकता है, तो कितना क्लोज वेवलेंथ को कितना अच्छे से अलग कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को हम स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कहते हैं. हाई रेजोल्यूशन मतलब बहुत अच्छे से सेपरेट कर पा रहा है. तो ये कह रहा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनका यूज होता है ग्रेटिंग्स का, और ये जो ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है और वहां पे हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन की जरूरत होती है. द लाइट वेव पासेस थ्रू द ग्रेटिंग एंड आर डिफ्रेक्टेड इनटू डिफरेंट ऑर्डर्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिंग बिटवीन द ग्रुप्स and angle of incidence. The transmitted light is collected on the other side of the grating and resulting diffraction pattern can be analyzed to determine properties of incident light. ठीक है, this is basics of transmission grating, और वो किस सेंस में सुपीरियर है, क्यों ज़्यादा यूज किए जाते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, और क्या कुछ ज़रूरत है जहाँ पे हमको रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग चाहिए होते हैं. ये कह रहा है कि ये ऐसी ग्रेटिंग होती है, एक रिफ्लेक्टिव सरफेस पे सीरीज ऑफ ग्रुप्स क्रिएट करके बनाए जाते हैं. द इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द ग्रेटिंग एंड द डिफ्रेक्टेड लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स द इंसिडेंट लाइट सोर्स. ये लाइट सोर्स है, ये यहाँ पे पड़ा और फिर रिफ्लेक्शन पैटर्न हो गया, डिफ्रेक्टेड लाइट फिर वहाँ पीछे जा रहा है. तो रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग्स ये ज़्यादातर यूज होते हैं जब हमको मोनोक्रोमेटर्स बनाना होता है. मोनोक्रोमेटर्स क्या होते हैं, हम कोई भी लाइट है उसके अलग अलग कलर्स को हम सेपरेट करके अलग अलग एनालिसिस कर पाएँ, इस तरह की जो सेटअप है उसको हम मोनोक्रोमेटर्स कहते हैं. ये क्या करते हैं, दिस इंस्ट्रूमेंट दे यूज टू आइसोलेट स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट. कुछ लाइट आपको दे दिया, उसमें से हम कहें कि ये वाला वेवलेंथ अलग कर दो और ये कितना है ये बता दो, तो हमें मोनोक्रोमेटर्स की जरूरत पड़ती है. सो इन एडिशन रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग्स आर यूज्ड इन लेजर सिस्टम टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द आउटपुट ऑफ लेजर बीम. तो ये लेजर सिस्टम्स में भी यूज होते हैं. फिर कह रहा है कि ये जो ग्रेटिंग्स हमने ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग की बात की, इसमें भी कुछ और क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं. किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ ग्रुप्स. यहाँ पे आप कुछ पिक्चर देखें, ये ग्रुप्स देख रहे हैं, इसके ग्रुप्स कैसे हैं, इसके ग्रुप्स कैसे हैं, एंड हियर यू सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो दे आर डिफरेंट टाइप. इस तरह से अलग अलग करके आप अलग अलग तरह का ग्रेटिंग बना सकते हैं. तो मोस्ट कॉमन शेप है साइनोसाइडल एंड ब्लेज्ड. दिस इज यू सी ए साइन वेव काइंड ऑफ थिंग. दिस इज साइनोसाइडल, दिस इज ब्लेज्ड. सो व्हाइल ब्लेज्ड ग्रेटिंग सॉ टूथ, ये साइनोसाइडल शेप दिखाते हैं ग्रुप्स का, ये सॉ टूथ शेप दिखाते हैं. और ब्लेज ग्रेटिंग ये किस लिए होते हैं, अगर हमको हाइयर डिफ्रेक्शन एफिशिएंसी चाहिए तो दे आर कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशंस सच एज स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड लेजर सिस्टम. सो नाउ यू हैव एन ओवरव्यू ऑफ क्या होता है ग्रेटिंग. अभी हो सकता है आपने ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट में देखा हो, तो आपने कुछ ग्लास प्लेट जैसे दिखा है एंड यू सी देयर डिफरेंट कलर्स, यू अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको थोड़ा उसका इंसाइट पता चलता है कि ग्रेटिंग मतलब क्या, ग्रेटिंग कैसा है और कितने तरह के हो सकते हैं, क्या क्या कुछ और डिफरेंस हो सकते हैं. जैसे आपने ग्रेटिंग देखा है, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों की भी एक समझ यहाँ पे डेवलप हो. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स. सो क्लासिफिकेशन में हमने ब्रॉडर कैटेगरी में कहा ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग होते हैं. उसके बाद कह रहे हैं कि जो ग्रुप्स हैं उनके कैसे बनाए गए हैं, उस पे बेसिस पे भी और भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से. जब आप इस तरह के सिस्टम में काम करेंगे, then you will identify how it could be important, how it could be useful. Okay, now let us try to figure out what are their major application of these gratings. तो हमने कुछ बात पहले भी किया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वहाँ पे ग्रेटिंग्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये क्या करते हैं, दे आर यूज टू सेपरेट एंड एनालाइज डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इन ए बीम. एक लाइट है, कहाँ से आया उसकी हमको स्टडी करनी है, हम इसमें अलग अलग वेवलेंथ को सेपरेट करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं. दिस इज व्हाट डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग डू. स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, दिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई केमिकल कंपोजिशन ऑफ मटेरियल. स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कोई भी सैंपल है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है ये जानना चाहते हैं. एंड डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग्स आर यूज्ड इन ए वैरायटी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स such as spectrometers. Spectrometers में monochromators and wavelength meters. Spectroscopy is used in fields such as astronomy,
केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशनल साइंस। तो ये सब जगह स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होती है और स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स यूज होती है। तो दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ लेट अस look at next thing, what is laser beam shaping. Laser का जो beam होता है, laser has a lot of enormous application. We will talk about laser in this unit later on. So diffraction grating इसमें क्या करती हैं? They are used to control shape and control the output of laser beam. Laser beam का shape क्या होगा और उसका output क्या होगा, इसमें हम diffraction gratings यूज करते हैं। Laser beams can be focused or expanded using diffraction grating, and different diffraction grating configuration can produce different laser beam shape, जैसे Gaussian, top hat, ring shape beam, ऐसे अलग अलग तरह के बीम क्रिएट करना है अगर, तो वहाँ पे भी हमको ग्रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेजर बीम शेपिंग इज यूज्ड इन एप्लीकेशंस सच एज लेजर मटेरियल प्रोसेसिंग, माइक्रोस्कोपी एंड लेजर प्रिंटिंग। सो यू सी कितने वाइडर एप्लीकेशंस हैं जो इंस्ट्रूमेंट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इनका फील्ड अगर देखें, जो जिस एरिया में ये चेंज लाए, जिसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, जहाँ नया नया टेक्नोलॉजी आया, नया सारा कुछ समझने का तरीका डेवलप हुआ, these instruments are playing very key role. Then another is optical communication. हम लोगों ने थोड़ा बहुत बात किया है. We will talk about optical fiber in coming lectures. Optical communication में diffraction grating यूज किए जाते हैं. Fiber optical communication systems ये क्या करते हैं? Separate and combine different wavelengths of light. Fiber optic communication में ऐसा है, ये यूज करते हैं optical fiber को to transmit data over long distance and different wavelengths of light carrying the data that can be separated and recombined using diffraction grating, and this enables the transmission of large amount of data over long distances at high speed. So here again, this is very key role played by diffraction grating in this communication, and it is very important. It is playing very important role in our लाइफ आज। होलोग्राफी एक फील्ड है जहाँ पे हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज करते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स आर यूज टू क्रिएट होलोग्राम्स। होलोग्राम्स होते क्या हैं? दीज आर 3 डायमेंशनल इमेजेस क्रिएटेड यूजिंग लेजर लाइट्स। सो आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट एनीवेयर, बट ये सब चीज़ें न्यूज में रहते हैं। कुछ टाइम पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक होलोग्राम दिल्ली में कहीं पे बनाया गया था, तो दिस वॉज इन न्यूज। तो होलोग्राम क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल इमेज होती है जो लेजर लाइट से क्रिएट की जाती है। इस यहाँ भी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कुछ काम करते हैं। ए होलोग्राम इज क्रिएटेड बाय रिकॉर्डिंग इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएटेड बाय ए बीम ऑफ लेजर लाइट पासिंग थ्रू अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड देन इल्यूमिनेटिंग द रिकॉर्डेड पैटर्न विद द लेजर बीम। दिस इज व्हाट होलोग्राम कैसे बनता है, ये बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। और होलोग्राफी जो है ये सिक्योरिटी, प्रिंटिंग, आर्ट और एंटरटेनमेंट ऐसे बहुत सारे जगह यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज इंस्ट्रूमेंट्स। वी ट्राई टू फिगर आउट दीज 2 diffraction gratings and interferometers. We try to look at the basic principle, basic operation, then different types of these instrument and its application in various fields. So I hope you must have learned a lot of things from this lecture, and it gives an overview. It ignites a curiosity inside you to probe further. This is how we can start to looking into the different fields, और ये important कैसे हैं इंस्ट्रूमेंट्स, कैसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो आप लैब में यूज करते हैं, they are playing very key role in advancing our understanding around the world. So we will meet again with some new concept, with some new topics in this unit. तब तक के लिए यहीं रुकते हैं। नमस्कार।